Hello student, today we are going to study about circulation path of blood in human heart. It is important for 4 marks question for your exam point of view. Before we start this question, let us have a look at the diagram part of this question. Here this is the structure of heart. Upper 2 chambers are called atria, lower 2 chambers are called ventricles. Heart is divided into 4 chambers in order to prevent mixing of oxygenated blood with deoxygenated blood. Now, this is the right atrium. Right atrium receives the deoxygenated blood from various parts of the body by vena cava. Vena cava from upper body, vena cava from lower body. So it receives deoxygenated blood. Then this deoxygenated blood is taken to right ventricle. So right atrium passes blood to right ventricle, and then this deoxygenated blood is taken to pulmonary arteries. With the help of pulmonary artery, this deoxygenated blood is taken to lungs for oxygenation. Then lungs provide oxygen to that blood, and that oxygenated blood is taken to pulmonary vein. Pulmonary vein take that oxygenated blood to left atrium. From left atrium, blood is taken to left ventricle. From left ventricle, blood is taken to aorta. So that aorta passes oxygenated blood to each and every part of our body. Between 2 atrium, valve is present. So left atrium and left ventricle possess bicuspid valve. Right atrium and right ventricle present tricuspid valve. This valve prevents backward flow of blood. Let us study step by step. Circulation path of blood in human heart. Heart is muscular organ as big as our fist. तो size of human heart is as that of fist. हमारी मुट्ठी जितनी size होती है. Heart has 4 chambers to prevent O2 rich blood mixing with CO2 rich blood. तो हार्ट के 4 चैम्बर्स डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखते हैं. सर्कुलेशन पाथ इन हार्ट. अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. तो अपर 2 चैम्बर्स को आर्ट्रिया कहेंगे. आर्ट्रिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्ट्रियम. CO2 कंटेनिंग ब्लड रीच टू लंग्स टू रिमूव CO2. तो CO2 वाला ब्लड लंग्स में जाता है CO2 को रिमूव करने के लिए. देन oxygenated blood from lungs reach to heart and then it passes to whole body. तो lungs के थ्रू जो oxygenated blood बनेगा वो हार्ट में पास ऑन होगा and heart to the various part of the body. Now left part of the heart. Oxygenated blood reach to thin walled left atrium from lungs through pulmonary vein. तो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा और ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू पास ऑन होगा. नाउ थीन वॉल लेफ्ट एट्रियम, जो हार्ट है उसके जो अपर 2 चैम्बर है दैट इज एट एट्रियम, दे ऑलवेज कंटेन थीन वॉल. नाउ व्हेन लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस इट रिसीव O2 ब्लड. तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स सभी ब्लड रिसीव करेंगे जब वो रिलैक्सिंग पोजीशन में होते हैं. नाउ व्हेन लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस इट रिसीव O2 ब्लड. व्हेन आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल रिलैक्सेस इट रिसीव O2 ब्लड. तो जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और वेंट्रिकल रिलैक्स होगा उस टाइम पर वेंट्रिकल में ब्लड पास ऑन होगा. व्हेन मस्कुलर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पासेस O2 ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू एओर्टा. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पास ऑन होगा विद द हेल्प ऑफ एओर्टा. एओर्टा इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय कलेक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज. नाउ oxygenated blood reach to each and every part and converted into deoxygenated blood. Now in right chambers, deoxygenated blood from the body collected at right atrium. तो राइट आर्ट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है एज इट रिलैक्सेस थ्रू वेना कावा. तो वेना कावा इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ वेन. बहुत सारी वेन कंबाइन होकर वेना कावा बनाती है. तो वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में पास ऑन होगा. नाउ
As right atrium contracts, CO2 blood passes to ventricle while it relaxes. तो जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पर राइट वेंट्रिकल रिलैक्सिंग पोजीशन में होगा और उस टाइम पर राइट वेंट्रिकल ब्लड CO2 कंटेनिंग ब्लड रिसीव करेगा. नाउ व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड इज पम्प्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पर CO2 वाला ब्लड लंग्स में पास ऑन होगा फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सिंस ventricle have to pump blood into various organs, they have thick walls compared to arteria. As I said earlier, arteria की wall thin होती है और जो ventricles होते हैं उनकी wall thick होती है, because ventricle have to supply or pump the blood to all part of the body. तो ventricles की wall arteria की comparison में thick होती है. Valves ensure that blood does not flow backwards when arteria or ventricles contract. तो जो valve है bicuspid and tricuspid valve वो blood की backward flow को prevent करते हैं हार्ट के अंदर. Let us revise it one more time. This is the structure of heart. Total 4 chamber, upper to arteria, lower to ventricles. Right atrium receive carbon dioxide blood or blood with the carbon dioxide, then it is taken to right ventricle. Between right atrium and right ventricle, tricuspid valve is present. This valve prevent backward flow. Then deoxygenated blood is carried to lungs with the help of pulmonary arteries. Lungs purify the blood and oxygenated blood is taken to left atrium with the help of pulmonary vein. Left atrium pass on oxygenated blood to left ventricle. Between left atrium and left ventricle, bicuspid valve is present to prevent backward flow of blood. Then oxygenated blood is taken to aorta and aorta supply oxygenated blood to various part of the body. I hope student आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.